गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। एक नया वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। आप कैसे हैं? और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस शेयर करें। दोस्तों, आप लोग शिपिंग में हैं और शिपिंग में हैं तो जहाज पे हो या घर पे हो या कहीं भी हो, आदमी की तबीयत खराब हो सकती है। तो तबीयत खराब होगा, अगर ज़मीन पे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर आप शिप पे हैं और आपका तबीयत खराब हो जाता है, आपको कुछ हो जाता है, मेडिकल इशू होता है या मेडिकल इमरजेंसी होता है, तो उस समय कौन आपका सपोर्ट करेगा? आपको कैसे और कौन सा स्टेप लेना है, कैसे कैसे उस स्टेप को फॉलो करना है और आगे आपको स्वस्थ होना है। तो दोस्तों, चलिए आप बात करते हैं कि मेडिकल ऑफिसर ऑन बोर्ड, विच रैंक इज द मेडिकल ऑफिसर ऑन बोर्ड अ शिप एंड विच ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो मेडिकल ऑफिसर कौन होता है जहाज पे और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन सा रैंक जो है मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करता है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उसके पास कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए एज पर डीजी। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो मेडिकल ऑफिसर का क्या काम है? अ मेडिकल ऑफिसर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिंग एंड ट्रीटिंग पेशेंट्स, सुपरवाइजिंग मेडिकल स्टाफ, managing clinical operations, ensuring compliance with healthcare standards, and implementing public health program. They are responsible for patient care, administrative tasks, leadership, and maintaining accurate patient record while also inducting the public on health matters. What are the duties of a medical officer? Specific duties include general administration, medical administration, healthcare, physical and supply training, pest control and sanitation, occupational health, preventing medicine, sexual assault prevention, response victim, advocates, shipboard operational commitments, and maintaining all the MDR certificates of eligibility. Yes, friends, the second officer, also known as the second mate, typically holds the duties of medical officer on a merchant vessel. While larger passenger or naval ships have dedicated medical professionals, the second officer is responsible for the administering medical care and maintaining medical supplies on most cargo ships. This role is a result of advanced medical first aid training that is mandatory for these senior deck officers. देखिए, नाउ इन 2010 वी कैन से द मेडिकल केयर कोर्स should be with a second officer, a officer with having second mate COC. तो सेकेंड मेट जो होते हैं, सेकेंड ऑफिसर होते हैं, उनको मेडिकल केयर सर्टिफिकेट की जरूरत है। मास्टर के साथ मिलकर उनको मेडिकल का, मेडिसिन का ध्यान रखना है, पेशेंट का ध्यान रखना है। देखिए, सेकेंड ऑफिसर जो होता है वो मेडिकल ऑफिसर ऑन बोर्ड होता है। This rank is commonly assigned the medical officer role on a merchant and cargo ship. They are responsible for the administration of the medical chest and providing care, often in consultation with shore-based doctors via radio. On larger ship, on a very large vessel like cruise ships or naval ships, a dedicated medical officer or a team of medical professionals may be the part of a crew. On naval ships, for example, the head of medical department is a high-ranking officer like a commander or captain.
advanced training. The second officer's medical duties are based on the advanced medical first aid training or medical care training they receive as a part of their mandatory officer certification. Primary duties and responsibilities. First, healthcare provision. Provision, general and emergency medical care to crew and passengers 24/7. Treat illness, injuries and handle medical emergencies. Offer routine and preventive medical care including managing chronic condition. Health and safety management. Oversee the ship's medical clinic including its equipment and supplies. Order the restock medical supplies and medications. Or maintain a safe and hygienic environment by conducting regular hygiene and public health checks. Manage and prevent outbreaks of infectious disease on board. Participate in emergency drills such as fire and abandoned ship drills. Regulatory and administrative tasks. Ensure compliance with maritime health regulations and comply policies. Maintain accurate patient record and logs. Report accident incidents and any unusual sickness to ship command and relevant authorities. Coordinate medical evacuations and liaise with onshore medical facilities when necessary. Other responsibility. Conduct drug and alcohol testing of crew members. Deal with pets on board that could affect health. Advise the ship's personnel on disease prevention measures for a specific area or ports. So friends, the second officer rank is a very responsible rank, and this rank is the medical officer on board. So how is the video? Kindly comment, kindly share, kindly subscribe the channel so that I could upload more videos related to you, related to your good health. Thank you for watching this video.